अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DigiLearnersPoint। आज हम फ्रीलांसिंग की क्विज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जो कि बैच नंबर 5 से रिलेटेड है। तो चलिए अपने क्विज की तरफ जाते हैं और उसके बटन को क्लिक करते हैं टेक क्विज के। आप लोगों से गुजारिश है कि क्वेश्चन यानी क्विज अटेम्प्ट करने से पहले ये सब इंस्ट्रक्शंस थॉरली रीड आउट करने और उनको अंडरस्टैंड करने। खासतौर पर ये 5, 6 एंड 7 जो रेड कलर में है ये वार्निंग से रिलेटेड है, इसको लाजमी अंडरस्टैंड करें रीड करने के बाद। तो अब हम अपने क्विज की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो हमारे पास टैब है स्टार्ट क्विज का बटन, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और ये हमारा क्विजेस डिस्प्ले होने शुरू हो गए। पहला क्विज है, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग? फ्री फ्रॉम बाउंड्री ऑफ टाइम एंड स्पेस, ओपन वर्क स्पेस, less time consuming, it pays more than the ordinary jobs, free from the boundary of the time and space. First option is correct in my point of view. तो save and move to the next. Question number 2 हमारे पास ओपन हो गया है। All of the following are barriers to effective communication except dash rating, a different interpretation of words, mixed signals from the sender, one-way communications. Rating. Save and move to the next. Question number 3 is now on the screen. In a freelancing marketplace, level of skills determines your success, objectives, punctuality, hard work determines your success. Option 1 is correct in my point of view. Save and move to the next question. Now question number 4 is on the screen. The most important thing in freelancing is presenting your work, your degree, computer configuration, book reading. So I would like to go with the option number 1, presenting your work. Save and move to next question. Now question 5 is on the screen. Elance and Odesk were merged to form dash fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, guru.com. ये 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन में से I select option 2, upwork.com, and save and move to the next question. Question number 6 is now on the screen. Which language must be learned for effective communication in freelance market? Persian, जिसको फारसी भी कहते हैं, Dutch, English, Portuguese. So I will go with option number 3, English. Save and move to. Now question number 7 is in front of you. In freelancing, communication should be short, concise, informal, beneficial. 4 options हैं। तो I would like to go with option number 2, concise. Save and move to the next. Question number 8 is in front of you now.
What is an average turnaround of building in freelancing? 1 out of 5, 2 out of 5, 3 out of 5. Which one of the following is accurate advantage of freelancing? 4 options: cost effective, flexible schedule, income stability, public relations. Which one of the following? Flexible schedule. Soft, soft skills include dash, communication skills, freelancing skills, competitive skill, learning skill. So communication skill I think is the best. So I will go with the option number 1, communication skills. Save and move to next. Now our quiz is now finished. Sorry. उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ गया होगा और आपको कुछ गाइडलाइन मिल गई होंगी जो आपको हेल्प आउट करेंगी अपने क्विज़ को सॉल्व करने में। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।